When will the rapists and murderers of Delhi's Nirbhaya be hanged to death? After Delhi's Patiala House Court adjourned its hearing today in a plea seeking the immediate execution of the 4 rape convicts, Nirbhaya's parents have now moved the Supreme Court. The application filed in the top court cites inordinate delay in the execution of the convicts and their delaying tactics. The top court will hear the plea of Asha Devi and Badrinath Singh, her parents, now on the 17th of December. Earlier, hearing Nirbhaya's parents' plea, the Patiala House Court said that it cannot pass an order over death warrant as one of the convicts' review petitions is slated to be heard in the Supreme Court on the 17th of this month. The court, however, has agreed to issue the death warrant on the next hearing date, which is December the 18th at 2 p.m, once the review plea, if and when it is rejected by the top court on the 17th. आज कितनी आश्वस्त है आप जिस तरह से कोर्ट ने बोला था कि अगली तारीख पर डेथ वारंट इशू कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाएगी? जी, मैं पूरे तरह से कोर्ट पे विश्वास करती हूँ क्योंकि मैंने 7 साल से बड़ा धैर्य के साथ लड़ा है। ये भी एक हफ्ता मैं धैर्य के साथ लड़ूंगी। हाँ, लेकिन जब तक उनका डेथ वारंट हमारे हाथ में नहीं आ जाता, उनको फांसी नहीं हो जाती, तब तक हम शायद संघर्ष करते हैं। लेकिन पिछली तारीख पर मेरी आपसे बात हुई थी, आपकी आंखों में आंसू थे, आपने कहा था मैं निराश लौट रही हूँ। आज कितनी आश्वस्त है, कितनी आप आश्वस्त हैं कि आप बहुत जल्दी फांसी के पर ये लोग होंगे? आज मुझे उम्मीद जगी है। मैं ठीक हूँ, तसल्ली हुई कि नहीं अब हम उनके अपने इंसाफ के करीब पहुँच गए हैं और 17 तारीख को उनकी सुप्रीम कोर्ट से खारिज होगी। 18 को उनका जो भी डिसीजन होगा, उनका डेथ वारंट निकलेगा और उनको जल्द से जल्द फांसी होगी। The next date is 18th. The court has listed the matter for 18th because in the Supreme Court, one of the convicts, Akshay, has filed a review petition. That review petition is now listed for the 17th. The matter has now been kept by this court for hearing on 18th. देखिए, 17 तारीख को अक्षय कुमार सिंह की रिव्यू पिटीशन डिसाइड होनी है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जब रिव्यू पिटीशन डिसाइड हो जाएगी, फिर हमारे पास सिक्योरिटी पिटीशन की आती है। फिर अक्षय, विनय, पवन की तरफ से सिक्योरिटी पिटीशन फाइल करेंगे और पवन कुमार गुप्ता की जो ज्यूरिनलिटी दिल्ली हाई कोर्ट को डिसाइड करनी है वो होनी है, और अक्षय, पवन और विनय की तरफ से क्रिमिनल अपील दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो डिसाइड होनी है, और वो सारी चीज़ डिसाइड होने के बाद ही आगे की प्रोसीडिंग। इसमें 3 की रिव्यू पिटीशन ऑलरेडी जुलाई 2018 में डिसमिस हो चुकी है बाई गिविंग अ कोर्ट हियरिंग। रिव्यू पिटिशंस वर नॉट डिसमिस्ड बाई सर्कुलेशन, यानी इन चैम्बर हियरिंग बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और जिन लोगों की रिव्यू पिटिशन बाई ओपन हियरिंग डिसमिस होती है, उनके पास क्यूरेटिव का राइट नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा मिले और जो भी फॉर्मेलिटीज़ बची हैं वो जल्दी पूरी हों, बिकॉज पूरा देश चाहता है कि उनके निर्भया के साथ जो भी उन्होंने किया था उनके दोषियों को तुरंत सजा मिले। You see, they'll take all desperate measures. After all, it's a question of life. It's a judgment. It's a punishment which is irreversible. So everybody who is not afraid of the death, they will move heaven and earth. For that, you can't stop them. But the court will be guided by the principles. However, a delay of 7 years is too much, and you see, it amounts to double punishment. Okay, let's go straight across to India Today's legal correspondent Anisha, who has been tracking every step of this case. Anisha, the thing to look out for now is, and nothing before it, is the review plea on the 17th in Supreme Court. Well, yes, Shiv. Now, everything hinges only on what happens on the 17th. Now, because if you look at it carefully, what happened in the Patiala House Court today is that the judge very categorically said that I cannot pass any orders because this review petition is pending. The lawyers for the police as well as Nirbhaya's parents have requested the court to issue a death warrant, but the legal process is such that the death warrant can't be issued while there is a petition pending. Once the review petition is disposed of by the Supreme Court,
And remember, it is not clear whether there will be an order passed on 17th or not. The open court hearing is scheduled for the 17th. Yes. That is when we will find out what happens next. Nirbhaya's parents' petition, of course, is also there before the Supreme Court, saying that this needs to be expedited, that these petitions filed by the accused is a deliberate ploy to derail and delay. And there is another PIL that has been filed today saying that this entire issue, this entire exercise needs to be expedited because the people of India are losing their faith in the judicial system. So all eyes now will be on the Supreme Court on the 17th. And Anisha will be there to bring us the latest on the 17th as well. Thanks so much, Anisha, for getting us the latest on that. Well, even as the mercy and review pleas of the Nirbhaya convicts are still pending, Delhi's Tihar jail is gearing up for these executions. Sources say that the hangman, the executioner, will be sent to Tihar from Uttar Pradesh. They say that that Uttar Pradesh has 2 hangmen who can be borrowed by Tihar jail authorities for the hanging of the rape convict. Sources said that the hangman would be sent from Meerut. Not just that, the authorities have already ordered ropes for the execution from Bihar's Buxar jail. Earlier, a Tamil Nadu policeman had shown his willingness to serve as an executioner in the Tihar jail. हमारे वरीय पदाधिकारी के स्तर से लास्ट वीक 10 फांसी के फंदे बनाने का आदेश था हमको कि निकट सप्ताह में इसकी सप्लाई का ऑर्डर आ सकता है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 10 फांसी का फंदा बना रहे हैं. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.